Hello everyone, welcome to the portal of EarthaPoint, which is courses.earthapoint.com learn. And here on this portal, beta, you can go ahead and have a look at various categories of courses, which is IIT JAM, CUET, MA Economics, DEPR, DU semester courses, and whatnot. If you click on DU semester courses, you will be able to see the various courses on the portal which are available to you. A lot of these courses are an initiative of EarthaPoint, which means that we are not charging any fees, beta. This is only the portal fees, in which you have introductory mathematical methods for economics, introductory microeconomics, introductory statistics for economics. Then you have intermediate microeconomics, semester 3, intermediate microeconomics, macroeconomics. This is a paid course. Only this is for 5,000. So you can clearly see that in the paid course, if you click, you will also go ahead and get access to various assignments, and you will get access to various other concepts also. So you see here, you also have additional lecture, you have notes, you have assignments. Everything is part of the paid course for all the subjects. You can see past year papers being solved. You can see past year papers being solved and important numericals being discussed in the paid course. So this is a paid course which is for macroeconomics. But if you go ahead and if you look into the other courses of DU economic semester, they are available for no fees. This is only the portal fees that we are charging. Similarly, if you go ahead and you look into the 5th semester, game theory is a paid course in which we are solving various problem sets also. But other than game theory, other courses like economic growth and business cycle, like introductory development economics, these are all the initiative. Only portal fees is being charged. And if you go ahead and you look into this introductory development economics, you can see that I have gone ahead and I have covered a lot of the course, even though it is an initiative. You can see that unit 1 is completely covered. You can see that unit 2 is covered, and you can see that unit 4 is also completely covered. In unit 3 also, we have covered one chapter. So this is the link to our portal. You can go ahead, you can have a look at the various courses. Similarly, if you go ahead and you have a look at the IIT JAM courses, here you will be able to see the different mock test series for IIT JAM that have been launched. At the same time, you will be able to also see the question bank for CUET, which has been now launched, and you will be able to see the different other courses also, right? These are only few of the courses, beta. We do provide more courses also. These are the courses which you can directly access. But if you want a full-fledged course on IIT JAM or a full-fledged course on MA Economics entrance or a full-fledged course on Indian Economic Service, you can always contact Rohit sir, and he will go ahead and he will talk about the different courses that we have. So I just wanted to quickly show you the portal of EarthaPoint, and all of you can go to this portal and you can have a look at different courses. Okay, beta, thank you. This is the next debate that we want to study, which is called primary production, manufacturing, and services. Basically, what has happened is that there has always been an inclination towards the प्राइमरी सेक्टर. हमेशा देखा गया है कि जो हमारे लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो नॉट इंक्लिनेशन एक्चुअली, वो हमेशा से प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा प्रोमिनेंट है, राइट? एंड वेन एवर दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट, जब वो अपने अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं, तो दे ऑलवेज वांट टू शिफ्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. This is exactly what India also did. The moment India got independence, then in the first 5-year plan only, in the second 5-year plan, it decided to do import substitution and to focus a lot on the manufacturing sector. उसने सोचा कि हम सारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे करेंगे और हम खुद की चीजें खुद बनाएंगे, है ना? सो दिस इज समथिंग विच ऑलवेज हैपेंस, दैट अर्ली डेवलपमेंट economist have stressed on the importance
of reducing dependence on of low developing countries on प्राइमरी प्रोडक्शन। माने उन्होंने बोला कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको प्राइमरी प्रोडक्शन को कम करना होगा, एंड एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंपॉर्टेंस को इंक्रीज किया है और प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस को कम करने की कोशिश की गई है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इवन जो भी हमारी लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे हैव ऑल्सो अडॉप्टेड सिमिलर पॉलिसीज। ऐसा देखा गया कि ना ही सिर्फ स्ट्रेस इस बात पे था, इट हैज बीन सीन दैट नॉट ओनली द इकोनॉमिस्ट स्ट्रेस्ड ऑन दिस थिंग, बट द लो डेवलपिंग कंट्रीज दे ऑल्सो फोकस्ड अकॉर्डिंगली। So the low developing countries, they basically adopted the policies to promote growth of manufacturing sector. ठीक है, not only did they adopt policies to grow manufacturing sector, but also to produce their own कैपिटल गुड्स। उन्होंने सोचा, जैसे इंडिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि हम बाहर से मशीन नहीं मंगवाएंगे। उन्होंने जैसे इंडिपेंडेंस मिला, दे स्टार्टेड थिंकिंग वी विल नॉट ऑर्डर मशीन्स फ्रॉम आउटसाइड, वी विल प्रोड्यूस अवर ओन मशीन्स, हम खुद की मशीन्स बनाएंगे। ठीक है, सो व्हेन दिस स्टार्टेड हैपनिंग इन लो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, द शेयर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन रिड्यूस्ड। तो उन्होंने प्राइमरी प्रोडक्ट्स को बनाना कम कर दिया। ठीक है, और जब प्राइमरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कम हो गया, सो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए, यू कुड नॉट सेल आउटसाइड, सो एक्सपोर्ट्स फॉर दीज डिक्लाइंड। ठीक है, हाउएवर दिस स्ट्रैटेजी कि आप मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट कर जाओ, प्राइमरी को फोकस करना कम कर दो, दिस स्ट्रैटेजी हैज बीन हाईली क्रिटिसाइज। इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है ना। सो देयर हैज बीन criticism of this approach। ठीक है, क्यों? क्योंकि यू आर अगेंस्ट एग्रीकल्चर। अब आपने एग्रीकल्चर के अगेंस्ट कर दिया सब, हाँ, तो इट कैन लीड टू फूड शॉर्टेज। ठीक है, स्टैग्नेंट प्राइमरी गुड एक्सपोर्ट। प्राइमरी गुड जब आप बाहर ही नहीं बेच पाओगे, बिकॉज इट इज लेस फॉर योर ओन कंट्री, आपकी कंट्री के लिए ही नहीं है, सो इट लीड्स टू फूड शॉर्टेज, इट लीड्स टू स्टैग्नेंट प्राइमरी सेक्टर एक्सपोर्ट्स, एंड इट लीड्स टू failure to reduce poverty। देखो, whoever is poor people, they are mostly in the agricultural sector। अब जब आपने एग्रीकल्चरल सेक्टर से फोकस ही हटा दिया, when you remove the focus from the agricultural sector and when you put the entire focus on the manufacturing sector, so basically you fail to also reduce poverty। माने एक तरीके से what you are doing is you are removing your focus from backward एंड ट्रेडिशनल सेक्टर। आपने अपना सारा फोकस बैकवर्ड और ट्रेडिशनल सेक्टर से हटा दिया, और बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सो यू आर पुटिंग मोर फोकस ऑन अर्बन सेक्टर। है कि नहीं बेटा? एंड दिस इज कॉल्ड एज अर्बन बायस। when you put more focus on the urban sector, जब आपने अपना सारा फोकस अर्बन सेक्टर पे डाला, so what is this called? This is called as urban bias। ठीक है, it has been seen that there have been many countries who have grown even after putting a lot of their focus on the primary sector। ऐसा देखा गया है कि there are countries like Canada, Australia, Argentina, whose focus was not on manufacturing sector,
but primary sector oriented countries, but they have done well. ठीक है, इसी तरीके से it has seen that many development economics have now started focusing on the agricultural sector. धीरे धीरे ये realize हुआ कि rather than focusing on only on the manufacturing sector, economists ने बोलना शुरू कर दिया कि we should be focusing on the agricultural sector. So there was increased importance of agricultural sector, especially after the coming up of green revolution, जिसमें क्या हुआ, increased productivity in agricultural sector. So basically what happened is that जैसे हमने देखा कि agricultural sector में भी productivity बढ़ सकती है, the moment we saw that agricultural sector can have higher productivity, it can give increased employment opportunities, it can also increase the opportunity, it can also increase the GDP of the economy, वो भी इनकम में कंट्रीब्यूट कर सकता है. सो वी स्टार्टेड हैविंग इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है, अब हमने क्या देखा है कि इन द रीसेंट पीरियड, बेटा एनीवेज इंडिया is known for something which is called as missing middle. Missing middle means इंडिया ने जब अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर का फोकस कम किया, it directly shifted towards the service sector. It didn't go for the manufacturing sector. So usually क्या होता है, you go from agricultural to manufacturing, manufacturing to service. But in India, this didn't happen. You directly moved from agricultural to service sector. So in the recent period, it has been seen that there are many low developing countries like India, where there was shrinkage of manufacturing sector and there was expansion of service sector. There was expansion of service sector. ठीक है, तो basically we have seen that yes, ऐसा है, हमने देखा है कि बहुत सारी डेवलपमेंट इकोनॉमीज जो हैं उनका पहले एग्रीकल्चरल ग्रो हुआ, फिर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हुआ, फिर सर्विस ग्रो हुआ. बट इन मिडिल फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रू, फिर सर्विस सेक्टर स्टार्टेड ग्रोइंग. बट इन इंडिया दैट डिडंट हैपन एंड डायरेक्टली वी सॉ दैट देयर वाज इंक्रीज्ड रोल ऑफ द सर्विस सेक्टर. ठीक है, एंड सर्विस सेक्टर it has highest employability in these low developing countries. ठीक है, so this is what is important. ठीक है, now again there are economists who debate on the strategies of industrialization. ठीक है, तो बहुत लोग, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट डिबेट करते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिड वी फॉलो द राइट अप्रोच इन गोइंग अहेड एंड इन फॉलोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, तो हाँ, ये बहुत सच बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने से मेनी कंट्रीज दे सॉ इंक्रीज्ड इनकम, they saw increased living standard. This is true that many countries have seen increase in income, many countries have seen increase in the living standard. However, industrialization is not meant for all. ठीक है, it can be seen that even primary sector oriented countries, even they have increased living standard. ठीक है, and even they saw increased migration from other countries. जैसे अभी तो हमें पता ही है the names that I have given you, which means Australia, Canada. I told you that they have grown due to primary sector. But यहाँ पे कितना increased migration है, right? Many people want to go ahead and live there. There is increased
capital flow also in these countries, right? So economic development is not always linked to industrialization. Even by growing the primary sector, you can go ahead and you can be on the path of economic development. ठीक है, primary sector में क्या है, जैसे there are some more examples that are given in the book, like for example, you can grow in copper, you can grow diamonds, you can be in oil, and naming the countries also opaque है ना. So by not सिर्फ manufacturing important नहीं है, these by growing in different resources also, these countries have shown in immense amount of economic development. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, हम ये कह रहे हैं कि हर इकोनॉमी का अपना ग्रोथ पाथ हो सकता है. इन सम कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन बी यूजफुल, and in some countries agriculture can be useful. So it is not that agriculture should be neglected. Similarly, it is not that industrialization should be neglected. Okay? And even regarding the service sector, it is not कि जितना service sector में services है, all services are the same. कुछ सर्विस होंगी जैसे एजुकेशन, आईटी, जो ज्यादा टेक्नोलॉजी डिमांड करेंगी, जिनमें ज्यादा ग्रोथ आएगी. कुछ सर्विस होंगी जो कम टेक्नोलॉजी डिमांड करेंगी, जिनमें कम डेवलपमेंट आएगी. सो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज विल हैव डिफरेंट पाथ, एंड वी आर नॉट promoting any one part. We are not promoting any one type of development. Primary sector has also proved to do well. Manufacturing sector has also proved to do well. Even service sector has proved to do well. जो countries service oriented है वो भी अच्छा कर रही है. Within service, not all services are the same. कहीं कहीं पे एजुकेशन एंड आईटी, जहां पे मोर टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, दैट इज डूइंग वेल, एंड इन सम प्लेसेस अदर बेसिक फंक्शनिंग्स, बेसिक सर्विसेज आर डूइंग वेल. ठीक है, सो दिस इज द डिबेट बेटा between your primary production, manufacturing and service. Okay beta, thank you.